Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test for detection of amino acid and proteins. Today we are discussing the biuret reaction. Biuret test is the test used to detect the presence of peptide bonds in the sample. It is to detect the presence of proteins or peptides. Polypeptides basically ये focus करते हैं. Identification test है, journal test है. Proteins and peptides polymers होते हैं amino acids के, as we have discussed that they are chains of amino acids. And these amino acids are connected with each other by the covalent bond called as a peptide bond. And this bond is between the carbon number 1 of one amino acid and the nitrogen of carbon number 2 of adjacent amino acid. And during the process of formation of peptide bond, one hydrogen and oxygen is removed. A peptide bond has a linkage of carbon CONH linkage. The nitrogen atom in the peptide bond of the proteins and peptides contain unshared electrons. ये वाला जो नाइट्रोजन है जो कि शेयरिंग में आया है इसके पास unshared electrons हैं. These unshared electrons of the peptide bond in an alkaline environment can be used by cupric ion present in the biuretted region to form a violet purple colored complex. तो जो हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास रिएक्शन करके क्यूप्रिक आयन के साथ रिएक्शन दे रहे हैं. ठीक है, Cu+2 इस जो है क्यूप्रिक आयन है. दिस इज अ कलरीमेट्रिक टेस्ट एंड साइंटिस्ट के बेस पे नाम है. Biuret is not an actual compound, rather than it is formed by the condensation of two urea molecules. When urea is heated at 150 degrees Celsius, biuret is formed. Same reaction होगा पेप्टाइड रिंग के साथ इसका जब ये बायोरेट रिएजेंट रिएक्ट करेगा क्यूप्रिक आयन के साथ, बिकॉज जो बायोरेट है इसका बॉन्ड सिमिलर है टू दी पेप्टाइड बॉन्ड. इसीलिए इस प्रोसीजर को इस टेस्ट का नाम बायोरेट टेस्ट रखा है ड्यू टू दी सिमिलैरिटी इन द एंड प्रोडक्ट्स. What is the principle? In an alkaline environment, cupric ions in the biuretted reagent bind to the nitrogen atom in the peptide bonds of the proteins, forming a violet-colored coordinated complex. The formation of this complex indicates the presence of the peptide bond in the sample. जितने ज़्यादा peptide bonds होंगे उतना ज़्यादा severe intense color create होगा. This is the cupric ion and this is the peptide bond. Here is the peptide bond due to this nitrogen. आप ये देख सकते हैं नाइट्रोजन के दरमियान cupric ion trap हो गया. This is the blue color. Protein are absent. It is a negative biuret test and this is a positive biuret test indicating the presence of a peptide bond. Dipeptides does not give a positive result for this test because polypeptide का structure similar है biuret के साथ. They are able to complex with the copper ion by the biuret reagent. Single amino acids and dipeptides का reaction नहीं होगा because as you can see कि at least हमारे पास 3 to 4 से 2 से ज़्यादा amino acids की linkages बनेंगी एक copper के साथ. 1 2 3 4 हमारे पास पेप्टाइड यहाँ पे लिंक बने हैं, इसीलिए डाईपेप्टाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं आता. सिर्फ हिस्टिडीन हमारे पास एक अमीनो एसिड है जो कि पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है क्योंकि वो पे पॉलीमराइज हो जाता है. हाउ दिस टेस्ट इज परफॉर्म? टेक 2 ml of the test solution and add 5 drops of biuret reagent. Mix thoroughly and note the color formation. What are the limitations? We cannot specify the number of peptide bonds present in the sample. हमें नहीं पता कि कितने ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, बस ये पॉजिटिव और या नेगेटिव रिजल्ट दे देगा showing the polypeptides. Furthermore, only soluble proteins can be detected. Ammonium and magnesium ions, carbohydrates, fats, and turbidity can enter the reactions. Amino acid histidine can also give up positive results. This is the lab activity in which several reagents are mixed. Here we have a test sample and we will add as a test sample and a blank solution and we will find the absorbance. The absorbance is give a tentative idea regarding the quantity of the protein in a given sample. For example, if you are preparing a standard solution of albumin with a concentration of 10 mg per ml, you can prepare a standard curve using various concentration of the albumin. This can be done by placing the test sample in the various amounts like 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4, 0.6 ml and then we will take its absorbance. Absorbance के हिसाब से 540 नैनोमीटर के अगेंस्ट हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं. This is all about the biuret test. Thank you.